तो बेरा एक होना किसी बात का अवसान न पुलिस आवना तो मना बेरा लग गई नू बता मना तो वाह बात है माँ के पेट में तो डड़ा लकड़ेगा तो बेटी भी प्यारी बेटा भी प्यारा है। Sapna and Suraj fell in love when they were in 8th standard, while studying in Kahani village of Rohtak, Haryana. Therefore, they belonged to the Chamar community. Sapna's brother Sanju decided to take revenge. In the night of November 19, he and his associates decided to take revenge and he shot her dead. I'm standing outside the house where 23-year-old Sapna grew up. A house her family says they emotionally left behind 4 years ago, the day she married Suraj. Even though both Sapna and Suraj belong to the same caste, that is Chamar, her family says the problem was something else. Here in this particular village, in Kahani village, there is a strict rule. You cannot marry within the village. And if you do, you must leave the village for good. So Sapna and Suraj followed the same rule. They left, but the villagers say when the couple returned about 2.5 years ago, it became a source of badnami for the village. It was shame and it became a gossip for the entire family. And today, as we stand here, the same family that once cut ties is now at the center of an alleged honor killing investigation. मन तो बेरा एक होना किसी बात का अवसान न पुलिस आवना तो मना बेरा लग गई नू बता मना तो वाह बात है माँ के पेट में तो डड़ा लकड़ेगा तो बेटी भी प्यारी बेटा भी प्यारा है। वो उन्हें न कुछ नहीं कही बेचारी न मनु कह दी अनु बोली माँ मैं को न जान दी मुख न जान दी तो बेटी थाने में हुई थी हमारी जो भी कुछ बात हुई थी तो उसके बाद हम नहीं मिले उसका कोई बात नहीं बेटी तू अपनी जिंदगी। आपकी मुलाकात सपना से कब हुई थी? थाने में हुई थी जी। ये कब की बात है? इवनू देख ले मार 4 साल पहले। उसके बाद आपको पता ही नहीं सपना कैसी दिखती है? मन्ना नहीं जी फिर मना हमने मिलन की भी कोशिश नहीं करी। अभी ये सपना का जब अंतिम संस्कार होगा आप जाएंगी उसमें? तब उसका पापा ये बता सका वो उड़ रहा तो मैं क्या कर सकूँ हूँ इसमें मैं नहीं जाऊँ। Despite warnings to police and Sarpanch, Sapna's killing is neither sudden nor unusual in this belt of Haryana. Marriages within the same village or gotra, though legal, are still treated as a stain on family honor and are often punished through social boycott, forced displacement, or, at worst, death. यह लड़की ने कोर्ट करवा रखा था वे ले जाती या गई नहीं बस फिर इन न्यू कह दी आकर पुलिस वाले ने भाई कोर्ट करवा रही से इसका भेजा दिया फिर दिया रन लगी थी 2 साल हो गए बस आज रात में कर दिया इसका खुद भाई कोर्ट पे थे 4-5 दिन थे। तो क्या गांव में मना है शादी करना अपनी ही जात में भी अगर आप हैं तो? नहीं जी गांव में दिया तो मतलब थोड़ा फर्क पड़ता है जी। एक तो मान लिया शादी कर ली थी आप शहर में रह जाओ तो कोई बात नहीं थी एक गांव में ये हो गया गांव में शादी करना मना है। I'm standing in the exact spot where Sapna was shot dead. This house has just 3 small rooms, and in the first room, right behind me, Sapna had gone to sleep after dinner. Her family says she wasn't feeling well, and she lay down early. Now, in the second room, just a few steps away, her brother-in-law Sahil and her mother-in-law Nirmala and a cousin were present. No one here expected anything unusual. The house had just settled in for night. But investigators say that's when her brother, Sanju, Sapna's brother, along with a few associates, allegedly entered the house and pumped multiple bullets into Sapna as she slept. What unfolded in these cramped rooms has left the entire neighborhood shaken. A killing carried out at point blank range inside her own house. कल कहानी गांव में एक बड़ी दुखद घटना हुई जिसमें एक लड़की का मर्डर हुआ है और उसके देवर को पेट में गोली लगी थी। इसमें जब पुलिस की जांच में हमें पता लगा कि जो लड़की है सपना उसने कहानी गांव में ही शादी की हुई थी जिसके रंजिशन उसके भाई ने और उसके दोस्तों ने मिल करके उसके घर जा करके उसको गोलियों से भून दिया जिसमें लड़की की मौत होगी और उसके देवर को पेट में गोली लगी जो कि हॉस्पिटल में उपचाराधीन है।
इसमें हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करके हमारी टीमें हमने बना दी हैं, 4 टीमें हमने बनाई हैं SP साहब के निर्देशानुसार, और उन पर छापेमारी चल रही है। जल्दी उसको इसमें अरेस्ट कर लिया। In district after district, CAP norms continue to override the law, and couples who marry by choice are pushed into hiding, police protection, or fleeing their homes altogether. We're outside the Sadar police station in Rohtak, where the officers have now registered a murder case in Sapna's killing, and multiple teams have been formed to arrest her brother Sanju and the other accused persons who have been involved in this particular matter. Now, police says that they are treating this as a planned attack and are verifying every movement inside the house at night. But beyond the investigation, the village's own rules are now under scrutiny. The Sarpanch told us that there is an unsaid but strictly followed norm here. 2 people from the same village cannot marry each other, even if they belong to the same caste. This isn't unique to this particular village. Many parts of Haryana still follow these social codes, and they are enforced quietly through pressure, stigma, and sometimes violence. Sapna's death has once again brought these unwritten rules into the spotlight and the deadly consequences when someone chooses to break them. Haryana continues to record some of the highest number of honor killing cases, 6 in 2023 and second highest after Jharkhand. Sapna's marriage violated Kahani's unwritten code. Her death reinforced it. I'm Samriti Tiwari reporting for The Print, and with me is Anand Mishra.